Hello Delhi, this is Rajesh Kapoor with you once again in a very special episode of Zindagi Delhi. We are here today with Dr. Priya Ranjan P. Singh, who's advocate, the Supreme Court of India, and the founder president of the ADR Center. ADR stands for Alternative Dispute Resolution. Very intriguing name, but and I'm sure that there is a concept behind this name which we will have to find out from Dr. Ranjan himself. So let's start our talks with Dr. Ranjan. Sir, welcome to the studios of Capital One. Thank you. It's our honor to host you today, and we presume that you are liking here and you're... Same here. Okay. Sir, as I just was talking to my audience, the ADR Center, the Alternative Dispute Resolution, it's really intriguing and very thought-provoking name. Yeah, this is a common practice world over. It's alternate to the existing legal system. And if almost all the developed and developing countries, they have got their own ADR center. I myself have created it for India. So this is the brief introduction of our organization, the ADR Center. ADR stands for Alternate Dispute Resolution, or you can say Amicable Dispute Resolution, right? So it is flexible kind of thing, and it is being provided by our established law, which is the latest. Though we have an older law also in this, but the latest one, which is an Arbitration and Conciliation Act 1996. So since then, we have got this full-fledged alternate system where you have a premier organization like Indian Council of Arbitration, which is there for the last 60 years, or more than 62 years, in place in India. I am a panelist arbitrator over there. So it's basically that it is a kind of, you can choose your dispute resolution method, the process, and the kind of the place. It's not that it has to be like a courtroom. It is very flexible as per the choices of the parties in dispute, and except hardcore criminal matters, anything can be referred. So you mean to say that you have an alternative court kind of a thing? Yes, in the premises? Yes, we have got that, and the whole concept, I'll explain you what exactly it is. It is a kind of that when we felt that the burdening of cases in the regular court system, so you have to opt. Even the court has got it. Like you must be knowing that mediation center, the courts are being organized, the lok adalats and all. So it is just the alternate to the system to lessen the burden. The more popular word is out of court settlement. Out of court settlement, it's easy to understand that way. Yeah. So it's out of court settlement is one, which is that one way around, that is lok adalat or mediation center or something like that. But you have a complete alternate system where you have three procedures. One is conciliation, second is mediation, and third is arbitration. The conciliation is that when party in dispute just sit together and settle it through a kind of mutual understanding. But it doesn't have that effect, Even they settle it, but later on they can refuse, they can raise the dispute later on in the same dispute, right? And they can raise further. But when it comes to the second process, that is called mediation. The mediation is the dispute is being settled through and by the party in dispute, and the trained mediator, which used to assist both the party in dispute, they just the mediator role is that they cool down the party in the dispute. They arrive to a situation where they find it that it's okay, fine, it's now it is settled. So it is concluded with the settlement agreement. But
the mediator doesn't intervene in that. They just put it a floor where the settlement can be done. But once it is settled through settlement agreement, which is to be signed by both the parties, that parties cannot rage after signing that agreement. That cannot be challenged in any court of law. Really? Yes, that is more effective even to the court of law. You know, it cannot be challenged in the court of law or even Supreme Court. It cannot be challenged. My next question was to be that only, that since it's an alternative method of arriving at a dispute settlement. Right. So how serious does the Court of India, the Supreme Court of India, take it? The decisions passed or the judgments passed by the ADR, how seriously are they taken by the courts of India? See that even the convention is that all the retired judges of High Court and Supreme Court and even lower judiciary, they are being made arbitrator in different institutions. We are one of the institutions. We are the smallest one. There are other institutions like Indian Council of Arbitration. It's the biggest institution in India. And there are foreign institutions also coming under the name of LCIA, and other people are there, where the biggest stakes like international commercial arbitration is there, where you have a few hundred crores of worth of dispute, which is to be settled by the panelists also. That's called a like bench you have in the court. Here also that's called the arbitral tribunal, which constitute three membered. Two are the arbitrators, and third one is the principal arbitrator. So all constitute three. That is a bench, arbitral bench, and that the whole is arbitral tribunal. So I was saying that mediation was once. The two I have already explained you. Third one is it is just at par almost with the court procedure where the adjudication is being done. So that the process is the same, only it's flexible, and it is curtailed the time and the cost. Of course, it's speedier and more effective, and it's the courts are very much appreciating that. The courts are very because they know it. Even to the best of their effort, they cannot curtail all this burden. But sir, I mean the cases where properties worth crores are involved, and the disputes are really serious. How serious are the people involved the people, the plaintiffs, so to say? How serious are they in taking their cases to a court like yours? Yeah, very good question. This is what is required. That people are not aware of it. The process, and this is what it is required, and we felt it, and that is why we dedicatedly we have designed a different kind of courses. So the ADR Center is now working on the three aspects. That one is that we have established one law firm which is promoting the ADR concept, that is in the name of ADR Centric Juris LLP. We have got that law firm. Then secondly, that we have got the court, which is promoting mediation and arbitration and even to the conciliation also. And we have recently passed out the one judgment, one arbitral rebut, which was in the matter. And thirdly is that that is going to answer your question, that we have got a collaboration with Chanakya National Law University very recently on 15th of March 2016, and the Vice Chancellor is very grateful. He is very kind enough to understand the situation, and we have got the mandate to design the whole as per the requirement of our country, and we have designed the courses to impart people of different walks of life, and we do specialize them in the dispute resolution process, like for like a PG diploma in alternate dispute resolution, property disputes, right? Specialize in property disputes. So those who really wanted to make it a career in property disputes,
they can come and they can have the information, and it is not required that they should be having a law degree or something like that. It's not even to the engineers, the scientists, or the science graduates, or anybody, architecture, or anybody, finance person, computer person also. If they have the interest, they can have additional qualification and specialize, and they can do it. Now, why people are not coming into it? Because that one is that they are not being encouraged by the lawyers. That is one. Because it's not a very good fetch, money making kind of thing. So it is being discouraged by the lawyers. That is one. It is very true. Though I am also a lawyer, but I do admit it. Because in conventional method you have a long run to go, and we earn out of it absolutely. much. There's an article in the papers just recently in which there was this statement that due to the differing of the cases, one case takes approximately around 6.5 years longer than actually it should have taken it to settle. Yeah. So, but you will surprise to know that in arbitration and ADR method, it's not even, most of the cases don't go beyond 6 months. What kind of cases does ADR actually cater to, and what kind of cases have they already catered to? So, Dr. Saab, it's definitely a wonderful thought. I mean, and a wonderful feeling to know that you have a shortcut someplace in seeking justice and all. So now, what kind of cases generally come up into the ADR? First, I'd like to correct yourself. It is not a shortcut. It's a very effective and established law. And it is long prevailing in prehistoric. Ghana, Puga, it's the prehistoric system of law where alternate dispute resolution was there in our prehistoric. So it's in India, it's prevailing since prehistoric times, right? And of course, in modern structure, we have got in 1890 around, we have got the oldest law. Then after 1940, you have arbitration law, where the court intervention was there. Now this law doesn't, there is no court intervention except only 2 or 3. One is that there has to be some kind of a conflict situation where you don't arrive to a situation to appoint arbitrator. So you can go to the court, ask for the appointment of arbitrator to adjudicate the matter. Right? So that is a one provision. And secondly, if the arbitrator does something bias or something, it's not being done. So if the award is defective, then it can be challenged in the court of law. Otherwise, it is not. That there is no direct court intervention in that. And it is getting popularized, but it is taking time because of that's old. Its empire. It takes time to and of course, as I said, that our lawyer community doesn't like to. Yes. There are people who are there, but most of them, they do not want it to be educated. If you go like beyond commercial level, it's not getting popularized. Except mediation, which is now attached to every court. Like Supreme Court, they have got a mediation center. High courts, they have got mediation center. Then district courts, they have got mediation centers, mediation and conciliation center. They used to have a impaneled mediator. So I would like to tell you here that the efforts of Capital One TV have definitely been only to bring to light the points which are helping a common man on the street. So when we heard about this concept, and when we talked about it in the office and in the behind the scenes, I'm telling you. So when we discussed this particular aspect in our studios, the creative team literally jumped onto the thing. They wanted to know more about it because it's such a soothing feeling that one gets when he gets to know that, okay, I mean, there is something which can seek from where you can seek justice, and so easily at that.
Yeah, that's So that's how we got onto your ADR Center, and we invited you to the studios. yeah. That's the ADR Center is basically it has been established in 2006, and now it is now 10 years. 10 years now, yeah. And but it's taking time to excel. But you know that we are doing it for a different aspect, and to educate people, to introduce in smaller contracts, and we give clause. You know that for ADR you need to have a kind of agreement that will bind upon the party, that they can first they have to try with the if there is a arbitration or ADR clause. Arbitration means that that you have to arbitrate the matter. If it is a ADR clause, then either of the process can be utilized. So even for the ADR arbitration, hardcore arbitration is not that. First, the arbitrator used to use the first method, that is conciliation, to make the flexibility where the people are very comfortable. You know, it's just a friendly environment. You can have your discussion very friendly. It's not that kind of they have to have a terror kind of thing, that there is a court which is to be stipulated, you have to be very strict discipline, or something like blah blah. It's not like that. It's very friendly, amicably, sit together. Okay, there is a dispute, but we can settle it out amicably. You know, it's not that we have to dictate the terms. No, not that way. And this, of course, it is less cost effective even to the court, and it is fast, speedier, and more of is effective, at par with the court order. Sir, there is a question which has just sprung up in my mind. I mean, how binding is your summon? Yes, it is at par the court summon. It's at par. Supposing I am it's as good as the civil court. Okay. It's as good as civil court. Yes. Acha, right. So now, you, as you said, it's binding. I mean, but supposing, I mean, let's talk about the course of actions when the summons are not taken seriously by the other party. So what course of action? Then as the court proceed ex parte, we also proceed ex parte, and ex parte award is awarded, and that award is being executed by the competent court of law. Okay, I see. With that attachment, even to the attachment. Oh my God, really? Yes. So it's just at par. In plain simple words, ADR is as effective as a court. Yes. It is only thing is that people should know about it. You know, अगर आपको ये लगता है कि इसको बहुत अच्छे ढंग से अगर मैं हिंदी में बात कर सकते हैं हम लोग, तो हिंदी में भी बात कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं. अगर मुझे आपको लगता है कि मुझे और फ्लेक्सिबल टर्म्स में बात करके मैं उनको समझाऊं, तो मैं बता सकता हूँ. नहीं, मैं समझता हूँ कि इस चीज़ को हम जितनी लैंग्वेजेस के अंदर बात करें, जितना इजी बना दें हम लोग दूसरों को समझने के लिए, उतना अच्छा है. और ये चीज़ डेफिनेटली मुझे जान के बहुत खुशी हो रही है कि इतना आसान है. बहुत आसान है. क्योंकि कई लोग हैं जो, अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग मैं पर्सनली जानता हूँ, और ये चीज़ें बहुत कॉमन भी हो गई हैं. आई एम श्योर हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी इस बात से एग्री करेंगे कि नॉर्मली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो कुछ नोटिस भेज देते हैं, कॉल्स करवाते हैं कि आपने जो है बिल्स नहीं पे किए हैं, जबकि वो कनेक्शंस को कटे हुए 3 महीने हो चुके होते हैं. हाँ, ऐसा होता है सर? ये अभी हमने एक इस प्रोजेक्ट पे हमने बहुत आपको जान के बहुत खुशी होगी कि हमने पूरे इंडिया का स्ट्रक्चर मैपिंग किया है. डिस्प्यूट के काइंड ऑफ डिस्प्यूट, किस तरह का डिस्प्यूट होता है हमारे कंट्री में, और किस तरह का डिस्प्यूट हो सकता है हमारी कंट्री में, और उनको किस तरीके से हम एडीआर के परव्यू में ला सकते हैं, और कैसे हम एडीआर सेंटर कैसे इसको इफेक्टिवली उसको डिसाइड कर सकता है और उसमें उसको रेजोल्यूशन पे ला सकता है. तो हमने उसको मोस्टली उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया. एक सर्विस और दूसरा प्रोडक्ट. सर्विस में सर्विस प्रोवाइडर
और जो सर्विस लेता है वो, दोनों के बीच में डेफिशिएंसी होती है जहाँ पर, उसको हम देखते हैं कि हाँ उसको कैसे सेटल किया जाए, और उसमें दोनों को स्कोप है। अगर सर्विस प्रोवाइडर ऐसा नहीं है कि हम बायस होते हैं कि सिर्फ हम इंडिविजुअल को ही कंसीडर करेंगे, नो, अगर कंपनी को भी अगर इंडिविजुअल से परेशानी है तो वो हमारे पास आ सकता है, और उसको हम इंडिविजुअल को हम कॉल करते हैं और उसके बाद में हम उसको सेटल करने की कोशिश करते हैं। दूसरा, प्रोडक्ट जो आजकल बहुत जैसा आप जानते हैं, ई कॉमर्स इज़ वन ऑफ द प्राइम कंसर्न नाउ इट इज़। वो सब लोग ऑनलाइन पे शिफ्ट होना चाहते हैं या शिफ्ट हो चुके हैं, और उसमें बहुत सारी भ्रांतियां भी हैं, बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। उससे क्या होता है कि जो क्वालिटी और क्वांटिटी, दो चीज़ों को एश्योर करना ट्रेडिंग में या ई कॉमर्स में, ऑनलाइन ट्रेडिंग या ई कॉमर्स में, वो बहुत ज़रूरी है कि आप जितना पैसा पे कर रहे हैं, जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं, जिस तरीके से पे कर रहे हैं, वो सही मायने में उसका यूटिलाइज हो रहा है, आप सही मायने में वो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है, या जो दिखता है वो नहीं आ रहा है, जिसके लिए आप प्रिज्यूम होकर के आप जो पे करते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में दे ऑल आर कम्स अंडर द परव्यू, यू नो। सर, इसी बात से हम लोग, मेरे को याद आया, आपने मुझे इंटरव्यू शुरू होने से पहले एजुकेट किया था कि आपने SDR, स्मॉल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जी हाँ, ये एक कॉन्सेप्ट आप नया फ्लोट कर रहे हैं, और मैं इसका ब्रोशर पढ़ रहा था, और ये मैं सभी दर्शकों को भी दिखाना चाहूँगा कि इस ब्रोशर के बारे में ये जानकारी जो है द ADRcenter.org, वैसे साइट का एड्रेस हमारे स्क्रीन पे आप देख भी पाएंगे इस समय। ये एक छोटा पैम्फलेट है जो एक्सप्लेन कर रहा है हमारे SDR कॉन्सेप्ट को, और इसके बारे में आप साइट के ऊपर भी देख सकते हैं। सो डॉक्टर रंजन, दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, दिस वाज बियरिंग ऑल दीज रेफरेंसेस व्हिच यू जस्ट स्पोक अबाउट। सो कुड यू प्लीज एक्सप्लेन अस इन डिटेल, आई मीन, हाउ टू टेक बेनिफिट आउट ऑफ इट? बिकॉज सॉरी टू कट यू शॉर्ट ऑन दिस, आई मीन, सॉरी टू disturb you. There was a difference of members also, so do explain us that as well. जी, यह आइडिया आया उसी दौरान जब मैंने आपको, जैसा कि अभी मैंने पहले बताया, कि हमने कैटेगराइज करना शुरू किया कि भाई किस तरह का डिस्प्यूट्स ज़्यादा है हमारी कंट्री में, और उसमें हमने पाया कि हमारे उसमें स्मॉल डिस्प्यूट्स ज़्यादा है। मैंने पर्सनली बैंक को अप्रोच किया, बैंक के लीगल हेड्स को या कॉर्पोरेट हेड्स को, कि भाई आपके जो NPAs होते हैं वो NPAs का साइज़ क्या है, और उन साइज़ में स्टेक होल्डिंग कितनी है, बड़े स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं या स्मॉल स्टेक होल्डर्स ज़्यादा हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि RBI में ये उनके साथ में मैंडेट है, वेदर इट इज़ ऑफ स्मॉल काइंड और अ बिगर, you have to clear the NPA, right? So irrespective of the amount, the size of NPA it has to go. Right. In that case, if suppose 5,000 का कोई भी अगर डिफरेंस है, right? कोई भी डिस्प्यूट है 5,000 का, NPA हो चुका है, तो उसको अगर रेगुलर कोर्ट में लेके जाते हैं तो that is going to cost you in lakhs for the bank also or for the individual also. It has got no mean. उसका कोई भी नहीं, क्योंकि हमारे पास में जो हमारे कंट्री में है वो प्रोसीजरल लॉ है। तो चाहे वो किसी स्टेट को, वो सिर्फ फिगर हमारे लिए, और लेकिन उसको फॉलो सारे प्रोसीजर करने पड़ेंगे। वो कोर्ट की भी मजबूरी है, बिकॉज वी हैव द एस्टैब्लिश्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, वी हैव द एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर, दे हैव टू फॉलो, दे हैव टू गो थ्रू दैट। लेकिन यहाँ पर हमने डिवाइस किया, ये मैंने इजाद किया इसको, कि क्यों नहीं हम एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिसमें स्मॉल केसेस को एकोमोडेट किया जाए और उसको मिनिमम प्रोसीजर पर हम उसको क्लोज करें, ताकि वो इफ़ेक्टिव भी हो और लोगों को कॉस्ट भी ना करे और उसका एक्चुअल बेनिफिट लोगों तक जाए। और तभी मैंने इसको इस प्रोजेक्ट का नाम दिया सक्षम। अच्छा, ओके। और इसका एक डिवाइस मैंने तैयार किया, उसका प्रोडक्ट नेम है अपना वकील। हाँ, ये मैं इस पे आने वाला था जी। तो ये अपना वकील मेंबरशिप कार्ड है, जो 4 कार्ड हैं। एक आप देखेंगे इसमें ऑन 3rd पेज या दिस या हियर ऑन 3rd पेज, राइट, दैट इज, तो वो एक यूनिट बनाया गया, उस यूनिट के हिसाब से मेंबरशिप है, एनुअल मेंबरशिप है,
जिसमें सारी चीज़ें प्रोविज़न दी गई हैं, हमारे साइट पे भी अवेलेबल है, theadrcenter.org, जैसा आपने बताया। तो इसमें गोल्ड है, डायमंड है, सॉरी सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड और प्लेटिनम 4 कैटेगरी है। उसमें वो 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड 6 टाइम्स करके इस तरह से है। और इसमें जो हमने एकोमोडेट किया उसमें प्रोडक्ट और सर्विसेज दोनों को एकोमोडेट किया है, लेकिन इसको हमने रिस्ट्रिक्ट किया है स्मॉल केसेस के लिए। स्मॉल केसेस को हम उसको वो कर सकते हैं, और हमारी कोशिश यही रहती है कि वो 1 दिन में सेटल हो, सिर्फ एक सिटिंग में, सिंगल सिटिंग। सर इसमें मेंबरशिप का या एक मेंबर बनने के बाद जी क्या बेनिफिट्स हैं? मेंबर बनने के बाद जैसे आप अगर मेंबर बन जाते हैं तो उसके बाद में पूरे साल तक आपका जो उस अमाउंट लिमिट के अंदर में जो भी डिस्प्यूट होता है वो आपको फ्री सेटल किया जाता है। अच्छा, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। सो इसमें डिफरेंट कैटेगरीज जैसे आपने बनाई हैं जी, तो नंबर ऑफ केसेस के ऊपर है, जैसे सिल्वर वाला आपके पास कुछ एक लिमिटेड केसेस लेके आ सकता है, या कुछ इसका नहीं, उसका लिमिटेशन जो है वो उसका सीलिंग है। जैसे जो सिल्वर कैटेगरी का एक सीलिंग है, गोल्ड कैटेगरी का एक सीलिंग है उसका। हाँ, लेकिन ये है कि अगर वो अपनी लिमिट एग्जॉस्ट कर देता है तो वो अपना रिचार्ज कर सकता है उसको। राइट, ओके। तो उसमें उसको बेनिफिट है कि उसको कहीं नहीं जाने का है, जो मेंबर है उसको कहीं जाने का नहीं है, वो रेफ़र कर सकता है, अपने क्लेम को रेफ़र करेगा, बाकी जो भी कम्युनिकेशन होगा, जो भी होगा, लेकिन वो सिंगल एक सिटिंग में हम लोग उसको सेटल करेंगे। ओके, मैं इसको फिर भी एक थोड़ा सा एलाबोरेटली आपसे समझना चाहूँगा। जैसे 6000 का एक मेंबर ने ले लिया, सिल्वर का इसने कैटेगरी का चूज़ किया, तो आपके पास वो आप उसको मतलब मान लीजिए वो एक केस लेके आता है, सो सेकंड केस मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने 6000 का सिल्वर से ही हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो सिल्वर के लिए उसने सपोज 2000 पे किया जी, 2000 में उसको 6000 तक का बेनिफिट दिया गया, मतलब 2000 उसने पे किया तो 6000 तक का उसके पास में कोई भी डिस्प्यूट आता है तो वो दैट विल बी सेटल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, ठीक है। और उस चाहे वो कहीं पर भी हो तो वो SDR वहाँ पर ADR सेंटर में वो सेटल होगा ADR सेंटर के रूल्स के तहत, और उसमें जिसके अगेंस्ट में है उसको भी समन किया जाएगा। राइट। और दूसरी चीज़ कि वो 6000 अगर लिमिट उसका एग्जॉस्ट हो जाता है या सपोज उसका साइज बड़ा है तो वो रिचार्ज कर सकता है, उसका वो प्रोविजन है, तो उसका लिमिट बढ़ जाता है ऐसी सिचुएशन में। राइट, सो इट हैज़ बीन डेफिनेटली अ वेरी eye-opening interview with you, sir. We are so thankful that you took out time from your busy schedule to educate us on the alternative dispute resolutions and the methodology of the same. And I am sure that once our viewers go through this interview and go through the various educational points that you have referred and you have pointed out, they are definitely going to take benefit out of it. I like to emphasize that by July the session is going to be started. तो जुलाई से सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ डिस्प्यूट्स is going to be started. We are going to launch it in the month of July. That's beautiful. So दिल्ली, जैसे कि आपने देखा कि हमारे जो लॉ प्रोसीजर्स हैं काफ़ी सिंप्लीफाइड हैं ऑलरेडी, सिर्फ इनकी एक एजुकेशन जो है प्रॉपर होना ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आप इसका बेनिफिट उठाएं, इस इंटरव्यू को जितना हो सके उतनी बार देखिएगा, बिकॉज इसके अंदर कुछ टेक्निकल पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि शायद आपको बार बार देखने पर समझ आएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए हो या फिर आपको डॉक्टर रंजन की कुछ हेल्प चाहिए हो, तो वो नंबर्स हमारे स्टूडियो के और डॉक्टर रंजन के आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नीचे यहाँ दिखाए जा रहे हैं, और ADR सेंटर का भी जो एड्रेस है वो यहाँ पे लिखा जा रहा है, वेब एड्रेस। तो आप कांटेक्ट कीजिए और अपने जो जीवन को आसान बनाइए, बिकॉज़ जितना आसान आप बनाएंगे उतनी सुविधा से यहाँ जी पाएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। डॉक्टर रंजन, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू सो मच।